everyone and welcome to my channel. Well, I know काफ़ी क्वेश्चंस है, काफ़ी बातें करनी है, मुझे भी बहुत कुछ बताना है. Okay, so starting with the number one question, where am I? मैं अभी इंडिया में हूँ. I am back in India. I am at my home in Pune right now. Hello. Okay, first of all, you guys, I'm talking to you in real time and it feels great honestly क्योंकि मैंने जो पिछले 1 साल में कंटेंट पोस्ट किया है वो मैंने पहले शूट किया था एंड मैंने बहुत टाइम बाद अपलोड किया है, ऐसा है. तो इस सब के बीच में बहुत कुछ हुआ है. A lot of you started following me because of my Netherlands journey and my masters. A lot of people want to go there and I totally understand it. And I remember मेरे thesis के पहले which was June 2024 May, that was the last video I posted about a day in my life which was in real time. And uske baad maybe I uploaded one or two videos about my graduation. That was the last real time video that you guys saw about my masters. The masters was honestly great. I completed it in 2024, but uske baad jo 2024 का सेकेंड हाफ से लेके 2025 तक का जर्नी था. इट वाज अ वेरी कंफ्यूजिंग टाइम फॉर मी पर्सनली. Of course everyone talks about the good things abroad and it is good. I also had good experiences, but also come some difficulties along the way. So I was feeling that, and also I was not able to wrap my head around what is happening. And also when you are in the process, आपको share करने का मन नहीं करता, right? क्योंकि मैं खुद figure out कर रही थी and I was like कि मैं कौन होती हूँ बोलने वाली ये सब चीज़ें, like the job situation. मास्टर्स के बारे में फिर भी ठीक था, आई वुड स्टिल टॉक अ लिटिल बिट, बट पैसे है, हाउसिंग, जॉब, क्या मुझे वहाँ पे रहना है लॉन्ग टर्म, नहीं रहना, ये सब मैं भी खुद फिगर आउट कर रही थी 2025 में. तो मेरे लिए एक डिफ़िकल्ट पीरियड था. और अभी जब मैं इससे बाहर आ चुकी हूँ तो आई एम फाइनली शेयरिंग एवरीथिंग. लोगों ने मेरे मास्टर्स के बारे में तो काफ़ी वीडियोस देखे होंगे ऑलरेडी, बट लेट मी टेल यू व्हाट हैपेंड आफ्टर 2024. ओके, so I was already working part time at Primark and it was paying me well that I could sustain myself and I didn't take money from back home. And at that point of time I also had a house, roommates, friends, everything settled. I started applying and honestly I was also getting some replies. I got selected for around 10 companies. I also gave interview for around 5 to 6 companies, second round, third round, even fourth and fifth round for that matter, all for the banks and big companies. And it was honestly going really good. The response from my interviews and the people I used to meet there at company events was also very positive. They used to talk to me very nicely. They used to tell me कि वो लोग team में what they are working on, what are the future scopes. I made my CV, my motivation letter, everything according to it, and it helped me getting the first round, clear the first round. So yeah, you know now that I also gave some interviews. But in 2024, from what I gathered was that the job market was a bit saturated, and also layoffs started happening, and hiring freezes started happening. One of the interviews I gave, it was a third round of interview, but after the third round they ghosted me. It was a US based company and they ghosted me for 3 months. And after that the recruiter personally emailed me saying that you left a very positive impression on us, but because of some uncertainties we are not moving ahead with the position in total. ऐसे बहुत सारे हुए. सी आई एम नॉट ट्राइंग टू से कि आई एम नॉट ट्राइंग टू ब्लेम देम. कहीं ना कहीं मेरी भी गलती हुई होगी, मे बी कि मैंने इंटरव्यू में मुझसे बेटर कैंडिडेट्स होंगे या फिर मैंने असेसमेंट में सबसे अच्छा स्कोर नहीं किया होगा, उसकी वजह से भी रिजेक्शंस आए रहेंगे. आई एम नॉट डिनाइंग दैट. External factors, plus every day I was staying there alone and just waking up and applying to jobs online, rejections, interviews, people only asking me this. Around
April, I started feeling bad. Bad in the sense I started feeling burnt out. I really wanted something new to happen. It's been so many months since I graduated. Um, कितना ही पॉजिटिव रहूँ मैं. I had started getting the questions कि do I really want to continue doing this? Between all of this, I was also working part time to, of course, earn money because that was important, and also started working for a Dutch NGO as a finance specialist. The work for the NGO was really nice. I was working in finance, the projects were really interesting, something that I aligned with. The team was also awesome, but unfortunately, they couldn't sponsor my visa कि जो HSM visa के लिए qualify हो. I also had the option to stay back because I applied for another course because my course was 1 year. So I could have done one more year of study, uh, and I could have easily stayed back. They would just like extend my visa. मैं उस पॉइंट पे खड़ी थी एंड इट वाज अ रियली हार्ड डिसीजन. ओके, मुझे नहीं समझ में आ रहा था क्या करूँ. कुछ लोग बोलते थे व्हाट डू यू फील इन योर गट, कुछ लोग बोलते थे कि यहाँ पे रह लो 2-3 साल में हो जाएगा फिक्स, विच इज़ ट्रू आई थिंक कि इवेंचुअली सबका फिगर आउट तो हो ही जाता है. और एल्स कम बैक टू इंडिया एंड हैव अ फ्रेश स्टार्ट. ओके, सो what happened was in April I somehow pushed myself कि ठीक है एक option तो है हमारे पास कि we could stay back and do one more years of one more year of study and figure things out. Hopefully situation will be better. So in June, so through some connections I tried to apply for a company. It was an international company, and but they said that at this point we are not able to sponsor your visa. But somehow there was a small project that was totally remote that I could do. Honestly, they were not giving me full time employment, it was just a small project. But at that point of time, I just wanted to work. There are different kind of people, and sometimes I'm that kind of people. If I don't work, if I'm not living up to my potential, it drives me crazy. And at that point of time, मुझे बस काम करना था, अच्छा काम करना था, चाहे वो कुछ भी काम हो, कहीं पे भी हो. So I took the decision to come back home and work on that remote project. And that's what I'm doing right now. Guys, I don't want to give a lot of information about where I'm working, what I'm doing, because I'm still working there and I don't want to put it out there. So yeah, this is the whole thing. Oh, and also the Dutch NGO, they agreed that I could work remotely from anywhere. So I'm still working with them. It has been almost 5 to 6 months. कैसे जा रहा है, क्या जा रहा है, ये सब मैं आपको बाद में बताऊंगी. And honestly, coming back home was a great decision. I am here with my parents, taking care of them. They are taking care of me. Honestly, I'm so happy कि मैं उनके साथ भी टाइम स्पेंड कर पा रही हूँ, अच्छा खाना खा पा रही हूँ. एंड टच वुड, ऑल माई फ्रेंड्स आर ऑल्सो हियर. सो माई चाइल्डहुड फ्रेंड्स, माई सोसाइटी फ्रेंड्स, एवरीवन इज हियर. वी आर सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स. हम लोग एक दूसरे के घर चले जाते हैं, हैंग आउट करते रहते हैं. सोशली आई एम सो बिजी हियर, विच मेक्स मी सो हैप्पी बिकॉज आई हैव रियलाइज कि अकेले चीज़ें करनी चाहिए, ऑफकोर्स आनी चाहिए करने के लिए, बट ऑल्सो people and community is something that makes life very special. तो बस मैं वही सब एंजॉय कर रही हूँ एंड मैं वही सब इस व्लॉग में दिखाने वाली हूँ. सो कीप वॉचिंग टू सी हाउ लाइफ लुक्स बैक इन इंडिया. दिस इज फॉर एनी वन हु इज बाय एनी चांस वॉचिंग दिस व्लॉग फ्रॉम अब्रॉड एंड थिंकिंग और इज इन द सेम सिचुएशन. आई सी यू, आई फील यू, एंड आई जस्ट वॉन्ट टू से कि plan B or the other option is not bad always. In fact, it could turn to be something better. मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और अच्छा. अभी मुझे समझ में आ रहा है, काफ़ी टाइम लगा समझने पे, पर आ रहा है. एंड नॉट इवन अब्रॉड, अगर आप अपने जॉब में इंडिया में कहीं से भी इस सिचुएशन में हो तो प्लीज़ बस एक अच्छा सा नोट लेके जाना इस वीडियो से. दैट इज़ माई इंटेंशन. ओके, एक चीज़ का ओपन माइंड रखो कि सबके इंटेंशन, पाथ, लाइफ गोल्स बहुत अलग होते हैं. कुछ लोग वहाँ पे सिर्फ एक्सपीरियंस लेने जाते हैं या फिर काम के लिए जाते हैं, कुछ लोग वापस लौट आते हैं, कुछ लोग को वहाँ पे ही रहना होता है. एंड आई अंडरस्टैंड कि बहुत सारे लोगों को फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स होती है, लोन होता है, चुकाना पड़ता है, तो वहाँ पे ही रहना पड़ता है, या फिर
मे बी इंडिया में वो अच्छे बैकग्राउंड से ना आ रहे हो, तो उनके लिए ऐसे होता है कि अभी बाहर जाके ही लाइफ बनानी है मुझे। बट सम ऑफ अस डू हैव गुड लाइफ बैक इन इंडिया एज वेल। इंडिया में भी स्कोप है, कुछ कुछ लोगों के बिजनेसेस होते हैं, कुछ कुछ लोगों को बिजनेस करना होता है, कुछ कुछ लोग फैमिली के लिए लौट आते हैं। तो इसमें मुझे सही या गलत कुछ लगता नहीं है। आई नो अ लॉट ऑफ पीपल मैसेज मी कमेंट कि भाई वहाँ पे ही रहना है, वहाँ पे ही सब करना है, आई वांट टू स्टे देयर, आई वांट टू लिव देयर, coming back is not an option. I was just 21 years old when I went there, and my intention was clear कि I want to study first, which I did. I was just at the beginning of my career, so I wanted to figure things out myself. But when you stay abroad now, there's like a lot of people you meet, right? And a lot of Indian people you meet abroad, and not everyone is encouraging, okay? And the thing is कि आपका एक छोटा सा बबल बन जाता है when you're staying there. You somehow start competing with others कि इसको वीज़ा मिल गया, इसको जॉब मिल गया. Many people have told me this कि कुछ भी कर लो लेकिन यहाँ पे ही रह लो, यहाँ पे ही लाइफ है। इन द सेंस कि कोई भी काम कर लो, मतलब काम, मैंने इतनी पढ़ाई की है फाइनेंस में, फाइनेंस का काम नहीं मिला तो भी कोई और काम कर लेना, बट यहाँ पे ही रहना। शादी कर लो, डेट कर लो, ये भी एडवाइस मुझे दी गई है, बिलीव मी और नॉट। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ना मुझे ये सब बातें अफेक्ट करने लगी थी, और मुझे लगने लगी थी कि यही बातें सच होती है यार। मतलब सब लोग बोल रहे हैं, मतलब कि मैं रो लूँ, मेरा मेंटल हेल्थ ख़राब हो, मुझे अपॉर्चुनिटी शायद वैसी ना मिले, मैं अपनी फैमिली से दूर हूँ, पर मैं कुछ भी कर लूँ, लाइक खुद को घिसवा लूँ, पर फिर भी अब्रॉड रहूँ। Also, guys, just because I moved back to India, it doesn't mean that I hated my life in the Netherlands, or I would discourage anyone to not go there. It is not like that. I think so. Uh, if I started a full time opportunity there and try to make the effort to set my life, I think that is also really great. I have friends who are doing that there, and they are really happy. Just everyone has a different path. That was the intention of this video. Um, I'm not here to say that this place is better or that place is better, but yeah, I did have a good time in Netherlands, you know. And there are so many things about the people there and their culture that we need to learn from. So I'm not going to say that it was a horrible experience or something like that, just that we had different experiences, or life works out in different ways for everyone. I think tough time to सबकी life में आता ही है, and believe me, at that point I thought I hit the wall and कि अभी कुछ नहीं हो सकता है. When people used to say कि stay positive and all of that, I was like कि yeah, this is not what I want to hear right now. Just give me a solution कि क्या होगा. And I really thought कि अभी खत्म है सब कुछ. But I guess not. There is always a way possible, and sometimes the way is not what everyone wants. I think that's what it is. Ki choosing the path that everyone thinks is right makes things easier and makes you more acceptable. Anyways, my DMs are always open. You can ask me anything about Netherlands, comment down below. I also have a Talkmate profile where we could talk one on one, and I can share all my experience about that. Anyways, that being said, I know a lot of people like to shit on India. Sometimes people have bad experiences and they try to generalize everything, but I'm not one of those people. I know India has a long way to go. There are so many improvements that needs to be done. But that being said, I also appreciate what we have here, like my family, friends, culture, traditions that I grew up with, our languages, everything. I could go about it. Anyways, guys, बहुत बातें हो गई अभी के लिए. Let's get started with this video and keep watching. We are going to have so much fun. Let's go. Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. So it is going to be a very interesting December for me. So I'm going to vlog it all. It is 29 November today and I'm at my friend's house. तो बेसिकली मेरी अदर फ्रेंड के भाई की शादी है, तो उसके लिए हम लोग ये घर सेटअप कर रहे हैं, विच इज़ सो फन. सो द प्लान इज़ अभी से एक हफ्ता इज़ गोइंग टू बी शादी, देन आई एम रनिंग अ मैराथन, then I'm going to Mumbai to meet my roommate from Netherlands. You know, if I get married, I'll be the first one to get married मेरे घर पे, क्योंकि मैं सबसे बड़ी बहन हूँ. एंड मैंने इतनी शादियाँ अपने लाइफ में अटेंड भी नहीं की है, बट दिस वाइब इज़ सो नाइस. तो अभी घर पे सब आएंगे, लाइक ऑल द फ्रेंड्स एंड फैमिली, दे विल कम एंड स्टे हियर, एंड कितनी मस्ती होगी. इट्स सो मच फन. एनीवेज,
अभी तो मैं हेल्प कर रही हूँ, बट आई विल सी यू टुमारो व्हेन द फंक्शन स्टार्ट एंड आई एम सो एक्साइटेड. Hi you guys, so it is finally 2nd of December today and it is around 4:30 and I'm going to get ready. So it is Sangeet today and they have lavender theme, and if you have been here for a while you know this sari. I wore it for my convocation in the Netherlands. So I have been living in this society in Pune for over 18 years now, and my best friends, one of my best friends brother is getting married, who is also my friend. हम लोग बचपन में साथ में खेला करते थे. He's a little bit older than us, and you know I live on the 5th floor and they live on the 7th floor, and I've known them my entire life, and it's weird to see कि ऐसे क्लोज में किसी की शादी हो रही है. मतलब हम लोग बड़े कब हो गए. एंड वेन यू लिव एट द सेम प्लेस फॉर अ लॉन्ग वाइल इट फील्स लाइक एक छोटी सी फैमिली बन जाती है ना, ऐसी छोटी सी दुनिया बन जाती है. During Christmas time only, like exactly 1 year ago, I was in Netherlands and she was also in the UK doing her masters. So I had actually gone to London to meet her and my brother, and we met in London, which is a very sweet memory, you know, कि हम लोग भाई लंदन में मिल रहे थे. And अभी exactly एक साल बाद now we are attending this wedding, like क्या. So she is also back in India, I'm also back in India, and हमारी like we have the comfort of our house, but at the same time new things are happening, so it all feels good. Okay, so with my hair I'm done. I tried to do soft curls at the end. It looks like this. Well, now I'm gonna go and get ready into the sari and see you. You guys, I'm all ready. I'll show you everything in good lighting and in a while, but I'm going right now because I'm late. Hi guys, so I'm back home and I'm just getting dressed to show the outfit. It was a very nice day, but it's time to get unready and sleep. Okay guys, so I am done undressing as well. I am going to sleep now, but see मैंने मेहंदी लगाई आज, इस हाथ में भी लगाई है. एनीवेज, आज का जो संगीत था इट वॉज मोर लाइक द ढोल वाला संगीत, एंड कल होने वाला है एंगेजमेंट स्लैश रिसेप्शन स्लैश जहाँ पे सब लोग डांस परफॉर्मेंसेज एंड ऑल करेंगे. तो इट विल बी फन टुमारो, बट आई एम गोइंग टू स्लीप एंड आई विल सी यू टुमारो. बाय बाय. द नेक्स्ट मॉर्निंग एंड देखो मेरी मेहंदी मस्त कलर आया है ना. Hi you guys, so it is day 2 and this is my outfit. अभी आई एम गोइंग डाउन टू क्लिक सम फोटोज़ एंड वीडियोज़, क्योंकि वापस शाम का फंक्शन है कहीं और है, तो आई डोंट नो शाम को कितना हो पाएगा. तो अभी थोड़ा सा टाइम है, तो आई एम गोइंग डाउन एंड डूइंग दैट. लेट्स सी हाउ इट टर्न्स आउट, बट लेट मी नो हाउ यू लाइक माई आउटफिट एंड ऑल्सो आई हैव मैचिंग चूड़ियाँ. You guys, so the शादी is going on in full swing and वो पीछे हॉल देख लो, it's only for food. बहुत मस्त है. अभी डांस परफॉर्मेंसेज होंगे बट थोड़ा लेट चल रहा है. Guys, so the wedding is finally over. मैं अभी वहाँ से आ रही हूँ and I saw the Gurudwara wedding for the first time in my life and it was so beautiful. But the big fat Indian wedding, जितना एज अ ऑडियंस देखने में मज़ा आता है एंड जो फोटोज़ वीडियोज़ आता है, इतना एग्जॉशन होता है. लाइक मेरे लिए तो फिर भी ठीक है. लाइक आई एम इमेजिनिंग फॉर माई फ्रेंड एंड अ फैमिली, इट मस्ट बी सो एक्सॉस्टिंग. बट आई फील लाइक अपनी इंडियन वेडिंग्स का तो अपना ही मज़ा है ना. But you guys,
अभी ना मैं आके बस लेट गई हूँ मेरे रूम में. आई एम जस्ट गोइंग टू डू नथिंग फॉर अ वाइल बिकॉज आई नीड सम टाइम टू recover from the 3 days of fun and chaos. Acha. And last thing, guys, on आज Thursday and on Sunday I'm going to run my first marathon ever. I'm so excited for that. I'm going to talk more about it in the coming days. अभी तो मैं चिल करने वाली हूँ and I'll go through the photos and videos. बहुत प्यारे प्यारे photos आए हैं. I'll post on my Instagram, so go and follow me there. Anyways, chalo, bye bye. I'll see you later. Hello everyone, so it is the 7th of December today and I'm about to run my first ever marathon. It is a 10k marathon and it is 5 a.m. I'm all ready. I'm going to leave soon. The reporting time is 5:45 and the race starts at 6:15. So all my life I used to play basketball, but after going to the Netherlands and everything, sports थोड़ा side में हो गया था. Well, honestly मेरे को running इतना पसंद नहीं था, but you know what? If you do it consistently, you like it better, and also the whole feeling of playing a sport is something really nice. Getting up, going to a match, seeing other people gives you so much energy. So I'm all for that. Let's see how this goes, and I'm going to take you with me, so let's go. Hi guys, so I'm about to run my first ever 10k, so let's go. Jungle rules the night, shadows sharp like switchblade knives. Run or fight, no room to think. Blood on pavement paints the ink. We're the wolves